Good afternoon, ladies and gentlemen. Hope you liked what you saw. Um, to create a show of this magnitude and scale, I think really requires a lot of time, effort, energy, and passion. Talking about scale and magnitude, I'll just share some interesting data points with you on what this series has done. Uh, Ashram chapter 1 and 2 has actually been watched by 160 million unique viewers. That's an unprecedented number for anybody to watch any kind of show. It's probably the most watched show um, on the planet, if not the most watched show on the planet. Um, when we launched chapter 2, within 17 hours, we had 50 million views. Um, it's interesting to say that, even out of the 160 million unique viewers that watched the show, 60 million actually came only from Mumbai and Delhi NCR. And the interesting part is that when we launched the trailer a week back, uh, within 6 hours of launch, it was trending at #1 across all social media sites organically. That's the power of a good show. And, like I said, that this is the kind of love and affection that the end consumer, the end viewer has given to this particular show. And to make it possible, I'd really like to thank a lot of people who made this possible, starting with my teammate, Tejpal, who's worked with me across the 3 seasons. Uh, the brilliant cast and crew of Ashram. You'll meet a lot of them here today. Without their effort, their passion, this is not going to be possible. But above all, I think the credit should go to the captain of the ship, the man with the vision, the man who breathed life into all these characters, whether it be Baba Nirala, Bhopa, Dr. Natasha, Ujagar, Pammi, Satti, all of these characters have found their own love with their audiences and their fans. And the man who made it possible, the man who gave or breathed life into these people, I'd really like to give all credit to him. Let me please invite the man himself, Mr. Prakash Jha. Thank you, Prakash Ji, for joining us. We'd like you to say a few words on the season 3. I have absolutely no words, run out of it. Gautam has said everything, and it was indeed a pleasure working with the team of MX. I was blessed to kind of have landed such lovely set of cast. Each one of them, proved themselves, put their life into it. And the crew which, really went through my rigors of working routine, and I am happy that such a story could come out and it could be viewed and it could be liked by such a huge number of people. Wherever I go, or in the past 1 year, wherever I've gone in the world, like whether it was London or airport or market or wherever, the first question was, Teesra kab aa raha hai? So now Teesra is here. You have seen that, tested it, tasted it. And I would like to call all my actors here. Yes. Who, please, Darshan, Rajiv, Tridha, Anupriya, Adhyayan Suman, आइए, and my team, Madhvi,
And who else is there? Where is Rajiv? Call everybody, Madhvi. और कोई है? This all? Well, बाबा So, आएगा, आसमान से आएगा, आने वाला है. सचिन, हुकुम सिंह जी आइए. can I request all of you all to be seated and we'll take one question for each of the cast members. You're always this close to catching Baba. Will you be able to unmask? जैसे आपने कहा कि वो भगवान बन चुके हैं, सो इतना आसान नहीं होता इतने पावरफुल इंसान को कैच करना या उन तक पहुंचना. तो उजागर की जंग जारी है. जैसे पहले चैप्टर में और सेकंड चैप्टर में हमने दिखाया था कि वो कोशिश कर रहा है, वो कोशिश करते रहेंगे अब इसमें भी. और उसके आगे क्या होगा, देखिए डायरेक्टर साहब ने पहले ही बोल दिया है. तो इसके आगे क्या होगा वो आपको शो में देखना पड़ेगा. Adhyan, Tinka Singh has always been a Yes. very important part of Ashram. Yes. Why does Tinka want to be associated with Baba so much? मेरे पास फिर यही होने वाला है. I don't think I can say much about कि टिंका सिंह के साथ अब क्या होने वाला है. But सबसे पहले I just want to say thank you to of course Prakash sir and thank you to Gautam sir for giving me this opportunity. And I keep telling people that मैं ऐसे वक्त पे प्रकाश जी के पास गया काम मांगने के लिए जब मेरे पास काम नहीं था और कोई काम नहीं दे रहा था, और प्रकाश जी ने अपना दरवाज़ा खोला मेरे लिए और आश्रम का दरवाज़ा खोला मेरे लिए. एंड it was just absolutely unexpected the kind of love that Ashram got and the kind of love Tinka Singh got in the show, and I'm going to always be eternally grateful for that. So that's number one. Number two, Tinka of course I'm guessing brings in some sense of relief to the show. इतना कुछ हो रहा है शो में, तो टिंका के बारे में ज़्यादा तो मैं कुछ नहीं कहूँगा. बट I'm just want to say it's going to be very exciting. Tinka is not just going to be singing and fooling around this time. A lot more is going to happen in the plot with Tinka Singh. So I'm just very excited and I'm just very grateful. And Esha Jha, of course, was one of the main reasons why I got the show. So thank you so much. Anupriya, from your experience with a Baba many years ago, what advice would you give women to avoid falling prey to fraud Babas? So this is for the women journalists in the room. So I think it's a joint responsibility of the women and the family around them as well. India is a country wherein we kind of get susceptible to magicians, babas, looking for magic to happen through them, or just for a spiritual journey. But spirituality is a lot to do with within. Then to just make somebody a medium, we do need people that we can look up to. But at the end of the day, they're also human beings. And I think that's what we've tried to show here, that don't give somebody the power to rule your life and let go of your own sensibility or intelligence in the process. Have faith and have faith on the God above. And when you're making somebody the medium, just give them that much importance while your individuality also is there enough to make the right decisions and not get carried away. So yeah, I think Ashram that way is a very, very important series. We've highlighted something that hasn't been spoken about in the past that much, and that's why I believe everybody related to it so much, because all of us have faced similar situations somewhere, and that's quite difficult to digest, but we all have, I believe. Yes, thank you. Tridha, the power structure in the ashram seems to be changing and skewing towards you. Tell us a little bit about it. First of all, Japnam, and thank you so much, MX, Prakash sir, the entire team, a wonderful cast, and thank you, audience, for being here. It feels great that we finally get to have a press meet, because post-pandemic, this must be a wonderful thing. The love our show has received, and we all are so elated to be here. Now moving on to the character Babita that sir has given. Kya bolu? It's very important that we've just seen her like a person who just comes into like a very, she probably uses her prowess and everything to do, but we'll see a lot more this season. And I guess women are given responsibilities, and I'm sure
in this season you'll find that they can take over. Yeah. Interesting. Rajiv, you're the journalist who helps Pami. We have a house full of media here. How tough was it to play this role? Firstly, thank you all for being here and thank you for the response to our show. Under the captaincy of Prakash sir, the role of a journalist was easy to play because, I mean, you know, the inputs he gave me for my character really helped me in playing my character truthfully and honestly. And I mean, he is a journalist and he's that sort of a human being who is practical and selfless, and he basically, without caring for his own life and limb, he goes out and helps people. When he sees somebody being exploited, he probably is one of the few people in the beginning of the series that sees the exploitation of Baba and sees Baba for who he is. So, I mean, the script was very well written. And like I said, under Prakash sir's guidance, it was easy to play the character. And it was very fulfilling to play such a part because hardly in life are we called upon to speak for somebody, not for ourselves. We, selflessly doing something for something else. I've always wanted to do, and fortunately, through the character, I got to do that. So, thanks. Thank you. Sachin, this time looks like Baba and Bhopa both are giving you a tough time. How are you managing to keep it together? सबसे पहले तो I would like to thank Prakash ji and Gautam ji and all of you. Post-COVID, as Sridhar said, that it's like a good thing that we all have had a get-together. Yes, both of them are giving me quite a tough time. And Prakash ji has, in fact, given a lot of layers to my character, which would help me face them pretty well. Now let's open the floor to actual questions from the media. If you'll raise your hand, we will pass the mic on to you. Yeah. जी हेलो प्रकाश जी नमस्ते. जपनाम, रेखा खान, नवभारत टाइम से. दर्शन जी, अध्ययन, पूरी टीम को सबको मैं बहुत सारी मुबारकबाद देना चाहूँगी. थैंक यू रेखा. बहुत सारी शुभकामनाएं. बहुत मैं आपके जो आश्रम है उसकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और बहुत ही बेसब्री से मैं सीज़न 3 का इंतज़ार कर रही थी. तो प्रकाश जी, मेरे 2-3 सवाल हैं कि आप लगातार मतलब ये कहते जा रहे रहते आए हैं कि ये जो आपकी सीरीज़ है ये राम रहीम या आशाराम बापू से बिल्कुल भी प्रेरित नहीं है, लेकिन हम देखते हैं कि बहुत सारे इसके जो इवेंट्स हैं उनमें काफ़ी समानता नज़र आ रही है. तो क्या कहना चाहेंगे? ये जो धर्म और आस्था की आड़ में, क्योंकि हमारे यहाँ जो गुरुकुल है, धर्म है, अध्यात्म है, संस्कृति है और जो गुरु हैं, इनकी बहुत गहरी और पुरानी परंपरा है. और चूंकि वहाँ तक पहुँचना कठिन होता है, इसलिए आम आदमी आसान तरीका ढूंढना चाहता है अपनी इनसिक्योरिटी से निकलने के लिए, और उस खोज को, उस विश्वास को बरगलाने के लिए, गलत इस्तेमाल करने के लिए ऐसे हमारे बीच में से कई लोग खड़े हो जाते हैं और गुरु बन जाते हैं. जिनको खुद का ज्ञान नहीं है वो दूसरों को ज्ञान देने शुरू हो जाते हैं. तो लगभग इन सबों के चरित्र ऐसे ही हैं, चाहे वो आपने जिनका नाम लिया वो या और भी कोई बहुत सारे हैं, उनके चरित्र ऐसे ही होते हैं. वो इस तरह का व्यवहार, इस तरह का व्यभिचार, इस तरह की विकृति उनके व्यवहार में जो है वो होती ही है. तो आपको कहीं ना कहीं वो शेड्स तो मिल ही जाएंगे. तो हमने हमेशा ये मेंटेन किया कि हमने किसी एक को ख्याल रख के उसकी जीवनी या उसके कर्मों पे नहीं बनाए. इसमें सबके थोड़े थोड़े जो पब्लिक डोमेन में सारी बातें हैं उनको समझते हुए, रियलिटी को नज़र में रखते हुए फिक्शन क्रिएट किया है कि इसके ताने बाने किस तरह से काम करते हैं, इंटरनल और दोनों एक्सटर्नल. और मुझे खुशी है इस बात की आपको कहने में कि जो प्लेटफॉर्म है MX प्लेयर, उसने हमें आज़ादी दी
इस कहानी को इंटरप्रेट करने के लिए उसने साथ दिया। जो क्रिएटिव टीम है, जो कंटेंट हेड है, गौतम है या तेजपाल हैं या वहाँ के जो भी रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, तो इस वजह से ये इस तरह से बन पाई है। वो, और जब भी आप पब्लिक डोमेन की किसी भी सब्जेक्ट को, सोशल हो, रिलीजियस हो, पॉलिटिकल हो, जब भी आप टच करेंगे, जो मेरी आदत सी रही है कि मैं ऐसी चीजें टच करता हूं तो लोगों के विचार होंगे ही होंगे, लोग कुछ नकारात्मक विचार भी होंगे, लेकिन मैं हमेशा यही सोचता हूं कि हर एक नकारात्मक सोच के सामने हजारों सकारात्मक सोच वाले लोग होते हैं। उसको अलग नजरिए से, सही नजरिए से देखने वाले लोग भी होते हैं, तो उनकी ज्यादा फिक्र नहीं करनी चाहिए। बाकी तो जो है सामने आएगा उसको देख लेंगे। तो प्रकाश जी, जब हम एक रिलीजन की बात करते हैं या राजनीति की या किसी तरह की कट्टरता की, तो उसके अनुयायी भी होते हैं, उसके विरोधी भी होते हैं। जैसे एफआईआर भी दर्ज हुई थी शुरू में, आप पर इंक भी फेंका गया। अब जैसे अब ये तीसरा सीज़न है, तो कहीं किसी तरह का एक भय है कि और इस तरह की चीज़ें जो कि पब्लिक डोमेन में भले हों लेकिन सिमिलैरिटीज से किसी न किसी बाबा के या उस तरह से सामने आएंगी, तो और कोई विवाद या किसी तरह की विरोध का आपको सामना करना पड़ सकता है। ऐसी कोई आशंका है आपके जहन में? आशंका जरूर है, कहीं कुछ भी हो सकता है, कोई भी कुछ कर सकता है, क्योंकि हमने विषय ऐसा चुना है जो कहिए कि समाज का विषय है, लोगों से संबंध रखता है, किसी एक व्यक्ति या एक कल्पना की कहानी नहीं है। और मैं ये कहूं कि मुझे डर नहीं लगता है तो वो भी बात गलत है, डर भी लगता है, लेकिन डर के जीना अच्छा नहीं लगता। तो उसके साथ जीता हूं। और हमेशा से मन करता है कि जो कहना है वो तो कहना ही है। किसी The novelty factor does wear off, right? People know now Baba does this and Baba does that, and to keep that sense alive, to keep that thing alive, is a very, very, very tough job. And you know, just kudos to the entire team sitting here. That's possible. Expectations are very, very large. That much I can guarantee you. Not from MX, but from the viewer largely. Excuse me. You were speaking. सर, मैं सिर्फ इतना ही ऐड करना चाहूँगा, जहाँ त्रिधा ने इसके बारे में बात की कि जब आप बाबा या गुरु जी के पास जाते हैं तो वो आपसे मांगते क्या है वो जानना बहुत ज़रूरी है, लेकिन कभी कभी गुरु आपको भी ढूंढ लेते हैं। और मैं एक बहुत पर्सनल क्विक कहानी बताता हूँ आपको। जब मैं सारे बाबा उसके पास गया, जब आश्रम के 1 महीने रिलीज़ के पहले, when I was in massive sort of going downhill emotionally कि भाई आगे क्या होगा, काम नहीं है, पता नहीं क्या होने वाला, आश्रम को लोग कैसे एक्सेप्ट करेंगे, एक बहुत ही स्ट्रेंज फ़ोन कॉल आया मुझे श्री श्री रविशंकर का। ना मैं उनको फॉलो करता हूँ, ना मैं कभी उनसे मिला, और ना ही कोई रीज़न था उनको मुझे फ़ोन करने का। और उन्होंने मुझे फ़ोन किया और माई फादर केम टू माई रूम, ही सेड, तो आई सेड मे बी इट्स अ प्रैंक कॉल, व्हाई वुड श्री श्री रविशंकर कॉल मी, यू नो। बट इन द नेक्स्ट 5 minutes आई वॉज ऑन वीडियो कॉल विथ हिम एंड ही सेड, मैं जानता हूँ दैट यू नॉट बीन एबल टू स्लीप, और मैं जानता हूँ कि तुम्हें ज़िंदगी में बहुत तकलीफ़ें हैं, mark my words, your life is going to change, and I know it. And I said, why are you calling me? He said, I dreamt of you. I felt like calling you. And he called me. And that is when ashram came after 1 month and my life changed. It's just, Guru, sometimes the right Guru can find you also, was my point. And it's a miracle, but it's just unbelievable. Prakash sir, my question to you is, after so many threats and consequences, what inspired you to make part 3 of this series? दोस्त, मतलब गंगा जल, अपहरण, राजनीति, आरक्षण, थ्रेट, और ये सारी चीजें तो मेरी जिंदगी का हिस्सा हैं। सर आप दबंग हो। Sir, I just needed to ask. My last question to beautiful actress here
Yeah. Thank you. Also Sachin. Beautiful actress. So, ma'am, what are your upcoming projects? Any specifically women-centric movie in your list? I mean, ये क्या क्वेश्चन हुआ इस जगह के लिए? मतलब आपने पूछ के भी ऐसा कुछ पूछा. आ रहे हैं, काम आ रहा है. Asur is coming. There's a film called Gubar with Vinay Pathak. Women centric role एक है आगे भी जो एक मूवी करने वाली हूँ. बाहर में यही बात दर्शन से पूछ रही थी कि मुझे बहुत एक्शन करना है, उसमें मुझे क्या करना चाहिए. I'm really not sure. But well, yeah, I think it's all upon the viewers. It's upon you journalists to support actors like us and to give women the due that they respect, they deserve, and appreciate work coming in. And I think things have become much better now. काफ़ी सारा अच्छा काम हो रहा है, irrespective of the gender. And good scripts are being written. This is the best time, I think, for Indian entertainment industry. And I don't think we have reasons to complain. It can only become better from here. प्रकाश जी, हेलो. हाँ जी? लिपिका. ये कभी त्रिधा का बात. I'll tell you. Ek Badnaam Aashram 3 is coming on 3rd of June. You must watch that. प्रकाश जी, Sridhar, we'll just take the questions because Yeah, Hemanji's questions are left to be answered by Rajiv, by Darshan and by Sachin. Yes. If you just respond to that question which Hemanji asked, if you had any personal experience. हाँ, बस वो ये आप तीनों आप ये question मेरे को छोड़ के. जी हाँ, गुरु के पास गए हैं. एंड जैसे कि अध्ययन ने बताया, प्रकाश जी ने भी बताया, त्रिधा ने भी मेंशन किया, आपको खुद पता लग जाता है कि क्या सच है और क्या विश्वास और क्या अंधविश्वास है. सो हर कोई अपने कमज़ोर समय पर आई एम श्योर सोचता है कि क्या करूं, तब इस तरह की कुछ कुछ बातें आती हैं सामने. कई लोग जाते हैं, कई लोग अपनी मेहनत पर विश्वास रखते हैं. यस, मैं किससे मिला था, बट यस मुझे ये भी फील हुआ कि हाँ, वो मुझे कोई अंधविश्वास में धकेल नहीं रहे हैं. वो मुझसे यही कह रहे हैं कि आप अपनी मेहनत पर विश्वास रखो, आगे बढ़ते चलो, सब अच्छा होगा. And just to answer to that question, कि even I have had the good fortune of meeting, saints and siddh people, जो छोटे छोटे गांव में रहते हैं, वो पब्लिसिटी नहीं करते हैं. बेसिकली उनको करने की ज़रूरत भी नहीं है और ना ही वो करना चाहते हैं. बट आप इंटुइटिवली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि हु इज़ द रियल डील एंड हु इज़ नॉट. एंड आई फील आपका दिल आपको बता देता है. एंड सेकेंडली, आई थिंक अ ट्रू लीडर, अ ट्रू स्पिरिचुअल पर्सन, अ ट्रू गुरु empowers you rather than exploits you. So that's what. जी नहीं, मैं कभी किसी बाबा के पास नहीं गया. हाँ, उजागर सिंह बाबा के पीछे ज़रूर पड़े. वो इसमें कैरेक्टर, एज ए कैरेक्टर ज़रूर मैं बाबा जी के पीछे हूँ, उनके आश्रम में गया. अदरवाइज़ मैं कभी किसी बाबा को मैंने फॉलो नहीं किया. अपने काम को फॉलो करता हूँ, पूजा ज़रूर करता हूँ हर रोज़. गॉड में बिलीव करता हूँ और मेरे लिए मेरा काम भगवान है और कोशिश करता हूँ उसी में अपनी श्रद्धा रखूँ, उसी से प्यार करूँ. प्रकाश जी, मेरा क्वेश्चन यहाँ पर है. प्रकाश जी, यहाँ पर वंदना बोल रही हूँ फिल्म इंडिया से. सर, आपको तो बोल रहे हैं कि बहुत स्ट्रेस मिले, लेकिन इसका कुछ इम्पैक्ट पॉजिटिव भी हुआ है कि कोई इंसिडेंट आपको याद है कि भाई कुछ पॉजिटिव, ये सीरियल देख के उस पर्सन का लाइफ चेंज हो गया या उसका माइंड सेट चेंज हो गया? कोई इंसिडेंट आपको याद है इस बारे में? आपको स्ट्रेस तो बहुत मिले, लेकिन कुछ पॉजिटिविटी भी मिली होगी पक्का. जब भी जहाँ भी लोग मिले और देखा और उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा लगा आपका आश्रम, तो ये पॉजिटिव बात हो ही गई ना. नहीं, किसका लाइफ मतलब वो बिलीव कर रहा था कुछ बच गए वो मैंने उसको फॉलो नहीं किया कि उसका लाइफ कैसा था और कैसा बदल गया. कोई मतलब उस रॉन्ग वे में गया हो और ये वेब सीरीज देख के उसने अपना माइंडसेट चेंज कर दिया, मतलब ऐसे कुछ कोई इंसिडेंट आपको किसी ने बताया? नहीं, मुझे ऐसा कोई किसी ने बताया नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि लोगों को जो अनुभव हुआ वो रिलेट कर पाया उस अनुभव से, जो जिंदगी में आसपास देखते हैं, समझते हैं,
और सबसे बड़ी चीज़ है कि उस अनुभव को वो समझ पाए। कई बार क्या होता है कि चीज़ें हम देखते हैं, हम चकित रह जाते हैं, लेकिन क्यों होती हैं वो समझ में नहीं आता। आश्रम क्या है? आश्रम की चूंकि कहानी ऐसी पसरी हुई है, फैली हुई है, तो उसका व्यक्तिगत, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, व्यवसायिक क्या उसके असर हो सकते हैं, उसके ताने बाने को आप समझते हैं तो आपकी आंखें खुलती हैं। तो ऐसा तो हुआ ही है, लोगों ने मुझे बताया है, बहुत सारे लोगों ने, कि अच्छा ऐसा होता है, तो समझ में आया। अवेयरनेस हुआ है जी। Hello, sir. Hello, ma'am. Here, I'm Shachi from Absolute India News. My question is from Anupriya and Trida, ma'am. Ma'am, being a woman, we are sometimes misunderstood as an object to be suppressed. So, do you think this Baba, the character of Baba, is more like a soch, but not a character? Like, there's no need to be a Baba to be like this. It is more like a soch. I'm sorry, you'll have to rephrase your question. So basically, my question is, can I ask my question, please? Yeah. No worries, you can sit and ask. बैठ के पूछे, no worries. So my question is, the character of this Baba is more like a soch. Do you think so? Because there's no need कि एक बाबा होगा तो ही बुरा होगा. Because we as a women sometimes misunderstood as a object to be suppressed. Your thoughts? So this has been going on for centuries, and it's not that men are doing it. I feel exploitation doesn't always happen because men are doing it. I feel women also throw themselves. They also think it might be an easier route to do things, you know, make something happen in their lives. So I will not always blame the men for being that, and we can't call men are being men. It's just, it happens in multiple spaces, you know. I don't think, I mean, it's not the sudden revolution that's happening. So women are not always suppressed, but yes, I'm very, very happy to the society that people are becoming more aware and they are standing up for it. And men and women, we're coexisting in a much better manner, is what I would say. So let's say exploitations are reducing, things are feeling more safe and better, right? Yeah. I think that's a wonderful question, and there are two parts to it as I see it. One, it's not about men and women, you know. आपने सही कहा कि वो एक सोच है. You know, बाबा एक ज़रिया बन जाते हैं क्योंकि आप उनको एक स्पिरिचुअलिटी का एक रास्ता मान लेते हैं. आप उनसे एक तरह की कभी आप कुछ चाहते हैं उनसे, कभी मार्गदर्शन चाहते हैं, कभी आप उनसे कुछ मिरेकल्स चाहते हैं. बट एट द सेम पॉइंट इन टाइम एनीबडी यू गिव द पावर टू, एंड सबसे ज़्यादा आई थिंक रिलीजन के माध्यम से बहुत ज़्यादा होता है. वे somebody a spiritual leader or a political party or anybody of a certain kind, they use a thing that touches your heart or can pull your strings to kind of exploit you or your sensibility and अपना काम करवाने का कोशिश करते हैं. तो वो एक सोच ही है. And yes, women are suppressed. They have been suppressed for a very, very long time, and it's upon us women and of generations, the one before us, and the one that we are, making now in the process of it, men and women both, to have respect for both the sexes, and to not give anybody the power to rule your life. While respecting opinions doesn't mean that you need to inculcate them and adapt them in your life completely. जैसे सर ने कहा, डायलॉग बहुत ज़रूरी है. वो डायलॉग हो ही नहीं रहा है, और शायद काफ़ी टाइम से नहीं हुआ है. हम चीज़ों को रीज़न आउट नहीं करते. हमें जो दिखाया जाता है वो देखते हैं, और जो हम सोचना चाहते हैं अपनी इनसिक्योरिटीज़ को छुपाने के लिए हम उन चीज़ों में चले जाते हैं, राइट. एंड I wouldn't say just women are suppressed, it's men too, और आज की, I think today's the times that we are living in is a huge example of that, कि patriarchy है हमारे society में बहुत ज़्यादा. Yes, the men in many places are the ones जिसके through पूरी family में एक सोच, एक धारा चलती है. But there are very strong women models as well, and they have been, like in my life, my dadi was the main matriarch in our family, and जो उनकी एक sensibility भी थी वो पूरी family में गुजरती थी. तो एक वो strong person होता है जिससे पूरी चीज़ें family की चलती हैं. और I think वहाँ बहुत ज़रूरी है कि हम अपने आसपास के लोगों को कितना जागृत करते हैं,
कितना हमारे सबकी वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, खाली एक जने की नहीं है। और वो मेन एंड वुमेन दोनों के साथ हो रहा है सप्रेशन ऑफ डिफरेंट काइंड्स। अनुप्रिया जी, on a lighter note, इन दोनों को कोई suppress नहीं कर सकता। अनुप्रिया, hello, this is Akshay प्रकाश from जी, मेरा INS एक लास्ट Newswire. क्वेश्चन आपको, बॉबी वाज द फर्स्ट चॉइस, तो आश्रम जो टाइटल है वो भी पहला ही चॉइस था, या यू हैड टू गो थ्रू लॉट्स ऑफ ब्रेन नॉकिंग, या फिर एक बदनाम बाद में भी एडप्ट किया वो? हाँ, मतलब वो कहानी अब इस बार तीसरे भाग में जिस तरफ मुड़ी है वो एक बदनाम आश्रम हो गई है, बट आश्रम जो है वो चॉइस थी, वो सजेस्टेड टाइटल थी और वो टाइटल अच्छी लगी। और इस आश्रम से कोई जेनेरिक बात न समझें, एक खास आश्रम, एक खास बाबा, एक खास तरह की जो संस्कृति उन्होंने फैला रखी है, जिस तरह का जाल उन्होंने फैला रखा है, उसके बारे में ये कहानी है। Thank you very much. It was such a So can we? pleasure. Okay. I'm sorry, The I'm last intervening in three between. questions from somebody who's not asked as yet. Can I ask? So Harleen, first question. Yeah. So पहले 2 सीजन्स थे, उन्होंने ऑलरेडी आपको एक बहुत ही दैट इज पुट यू ऑन सम प्लेस। तो इस बार लोगों की एक्सपेक्टेशंस आए हैं, तो आपने क्या होमवर्क स्पेशल किया? और प्रकाश जी, एक सवाल आपसे ये है कि जब सेकंड पार्ट आया तो ये पूछ रहे थे सब थर्ड पार्ट कब आएगा, इसको देखने के बाद क्या लोग पूछेंगे फोर्थ पार्ट कब आएगा? क्या प्रिपरेशन, आप बताइए सर। I think you'll have to watch it to know. Every actor had to definitely like maintain the character. That's a different thing. Like we're shooting after such a long time. फिर दोबारा character में घुसना, that itself is a preparation. So yeah, that was most required. And of course, the character that I play turns out to be a little more mature, as you see in this. So उसके लिए sir से बहुत डांट भी पड़ी. But I think I've done okay. Anupriya, hi, this is Akshay from सर हमारी तरफ से बोलना। Please let them answer. यहाँ विमेन सेंट्रिक रोल्स की बात हो रही थी, लड़कियों को बोलने तो दो। हाँ, तो आई थिंक सर हमारी तरफ देख के कहना चाहते थे कि इन लड़कियों ने कुछ प्रेपरेशन नहीं किया, ये क्या जवाब देंगी? तो हाँ, आई थिंक हम सब एक्टर्स का एक मीडियम रहा है फॉर being able to do our characters to the best of our abilities, and that's been Prakash sir. We've always looked up to him to guide us or to tell us what exactly to do and how to bring a scene to fruition. And he's been the biggest influence when it comes to our lives since we've started working in Ashram. And he was, of course, the script was great, the characters were great, but he's been the one sole reason all of us have gotten attached and being brought together. And I'm so proud to be a part of the series. And kudos to MX for being able to support such a concept. And yes, thank you to MX and sir that हम लोगों को इतना उसके लिए appreciation मिला. अब जो भी हुआ वो हाँ, वही मैं, जो अच्छा किया सब हमारा, जो गड़बड़ हुआ सब इसका। Anupriya, One sec. Let प्रकाश Prakash ji answer. ट्रेलर में हमने ईशा देओल को देखा, ईशा गुप्ता को, सॉरी ईशा गुप्ता को, गलती हो सकती है यार। ईशा गुप्ता के बारे में कुछ बताइए, उनके किरदार के बारे में। आपको ट्रेलर देख करके क्या समझ में आया? अच्छा, वो हमारे बाबा के अंदर का भगवान निकालने को आई हैं। इतना ही समझ लीजिए आप। अनुप्रिया जी, मेरा सवाल आपसे है, हमने लगातार आपको, मैम ये राइट यो मैम, हमने लगातार आपको देखा है मूवीज़ में काम करते हुए, ओटीटी में काम करते हुए। मूवीज़ की मैं बात करूँ, वॉर में आपने देखा था, पद्मावती में देखा था, एंड टाइगर जिंदा में।
बट इन सारे रोल की मैं बात करूँ, आश्रम 3 की भी मैं बात करूँ, वी हैव सीन यू डूइंग साइड रोल्स. सो व्हेन वी आर गोइंग टू सी यू डूइंग मेन रोल्स, जैसे गंगूबाई में आलिया भट्ट को मेन रोल मिला था, डू यू थिंक नेपोटिज्म हैज नेवर वर्कड इन योर फेवर? I'm not an industry kid, so how can it work in my favor? Yeah, ma'am, that's what my question is. Acha, whether it has been a hindrance? Yeah. So when we are going to see you in a leading role? मगर मैंने कहाँ आश्रम में आलिया भट्ट को कास्ट किया? नहीं, मेरा सवाल सर ये था कि अनुप्रिया मैम को हम कब लीडिंग रोल में देखने? एक बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछा है. वो क्या है? वो क्या है? एक बात आप समझिए. आपका प्रश्न जो है ना, अच्छा होते हुए भी तर्क संगत नहीं है, क्योंकि वो इनके हाथ में नहीं है. नो. आप जब पूछेंगे एक एक्टर से कि कब तुमको देखेंगे लीड रोल में, लीड रोल वो तो नहीं तैयार करता ना, वो घर वो बना ही नहीं सकता, क्या करेगा? मैम, बट आपको काफी समय से हमने देखा है, ओटीटी में भी काफी समय से देखा है, तो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज द मेन रीजन बिहाइंड इट दैट यू आर नॉट गेटिंग अ लीड रोल? बट हाउ कैन यू दिस? मैं वही कह रहा हूँ दोस्त मेरे. दर्शन ही सवाल आपसे. दर्शन. अनुप्रिया जी, अनुप्रिया जी, एक सवाल. अनुप्रिया, शारिक, दर्शन जी, अनुप्रिया जी, Sharik, I think we can call it an end. Let's. Darshan ji, no, but I would like to thank you for asking that question. Thank you so much. I would like to thank you for asking that question. Everybody to please stand up for the photo op. Guys, let them speak. Okay, one sec. What? दर्शन, दर्शन एक सवाल. Please silence. Okay, दर्शन एक सवाल आपसे. Okay, we have something for you all. If you all will दर्शन stay, जी, if you all आपसे will एक stay सवाल है. quiet, we have something for you all. If you all will just stay quiet for 30 seconds. If I request you all to please stay quiet for 30 seconds. It cannot be that we have Ashram and we don't have Baba Nirala with us. So I think we're lucky to have cut across all the network issues, and we will be having Bobby joining us from an ashram. देखिए करेंगे हमसे. So I think it will be a voice call. Just a sec. Please give us 30 seconds to just figure this technicality. किसका फोटो? मेरा? अनुप्रिया जी, एक सवाल आपसे है कि ये आप जो है अभी तक. हाँ जी बोलिए, प्लीज बोलिए. कहाँ है आप? एक क्वेश्चन मैम. हाँ, एक क्वेश्चन मैम. हाँ. आप जो है वुमेन सेंट्रिक फिल्म कर रही हैं, अभी तक हमने आपको सीरीज भी जितनी देखी हैं, तो आप जो है एक पावरफुल आपका रोल रहता है जी. तो ये आप डेलिब्रेट अटेम्प्ट है आपका वुमेन सेंट्रिक रोल करने के, ताकि इससे जो है आपको जो है ज़्यादा लोग देख रहे हैं ओटीटी पे? आई थिंक इट्स अ वेरी इंस्टिंक्टिव डिसीजन. ऐसा कुछ नहीं है कि मैं खाली विमेन सेंट्रिक, विमेन सेंट्रिक बोलना ही गलत होगा. मैंने ज़्यादातर ensemble स्पेसेस में काम किया है. यस, अभी एक मूवी रिलीज़ हुई थी जिसमें मैं लीड का किरदार कर रही थी, लेकिन क्योंकि हमें ज़्यादा स्क्रीन्स नहीं मिली एंड हम लोग उसको ज़्यादा प्रमोट नहीं कर पाए, फार्मर्स के ऊपर थी, वो ज़्यादा लोगों को देखने को नहीं मिला, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट. बट एट द सेम टाइम I think I have always been part of projects where the stories and the characters speak to me, where I would want to play someone who's very docile, who's extremely, unsure of her voice also, because as an actor I would want to play different shades. ये ऐसा नहीं है कि मैं खाली एक strong woman का अवतार ही play करना चाहूँगी. हाँ, मेरा ये point रहा है कि at the end of the story, what am I trying to project? मतलब अगर वो लड़की कमज़ोर है तो भले ही उस कैरेक्टर का रिडेम्पशन ना हो, बट स्टोरी में क्या उसको सही दिखाया जा रहा है, या उसको उसकी अपनी आवाज़ नहीं है तो हम उसको क्या प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं उस कॉन्सेप्ट को, तो मुझे प्रॉब्लम होती है. बट अगर स्टोरी के द्वारा हम लोग एक सोसाइटी को रिफ्लेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं जो आज है, और उसके थ्रू हम सॉल्यूशंस या चीज़ों को एक प्रोग्रेसिव तरीके से दिखाने की कोशिश करते हैं, एट द एंड ऑफ द डे, देन आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम प्लेइंग अ डोसाइल और वीक कैरेक्टर ऑल्सो. एंड आई हैव नो सच parameters to judge a script. It's only because of the makers who are involved, the actors, the script itself, and the character that I'm playing. प्रकाश, आप लोगों को भूख नहीं लग रही क्या?
प्रकाश जी आप सबसे मिल रहे हैं इतने 2 साल बाद, तो इतनी खुशी हो रही है उनको. मैं जो सत्य है वो बयां कर रहा हूँ. Okay, we'll let you go. We're just waiting. I think there is some issue with the camera. So, yeah, so we can do some pictures till then. No? Sorry, just a sec. One sec. एक मिनट. Okay, ये so देखो. I think unfortunately his camera is not going to be, we're not able to get that bit, but he will come on audio. Yeah, hi everyone. Hi, Bobby. Sorry I can't be there with my team, Prakash ji and everybody. Miss you guys. बाबा जी वहाँ ध्यान ठीक चल रहा है? हाँ जी एकदम सब देख रहा हूँ मैं, तो काम ठीक चल रहा है. So he can see us, but we can't see him. हमारी जो प्रार्थना थी आपकी, जरा हिसाब किताब हो जाए MX के साथ सही तरीके से, वो सब कुछ रास्ते पे है? वो पता नहीं सर, MX के हाथ में. If there's anyone who wants to ask a question to Bobby, then this is your chance. Yes, Sohail. हाँ पूछिए. Yes. How happy are you playing Baba, Bobby? Can you hear me? Yes. Yeah. Yes. Yeah. I mean, for me, it was the best thing that happened in my career right now. Thanks to Prakash. He gave me a great character to play, and I'm so glad in the audience. I've enjoyed and appreciated our work so much. Everybody in our cast has done an awesome job. It has been a great team effort, and the MX player has left no stone unturned to make it happen the way they did it, and I think it's just one of those things that happen, and no one knows how, but it was just one of the best things that's happened. Bobby, there was one question from Mr. Hemant in the media when he asked everybody whether you've ever had a personal experience with any Baba. Not really. Apart from me, huh? Apart from Prakash Baba. No, I've not really had experience. I've been just had a very sheltered life, and I've been blessed with a beautiful and lovely and loving family, and didn't need to go somewhere to ask for any guidance. My parents were my guides, and I was lucky. But there are some. It's just that the show talks about people who are these bad elements in our society who take advantage of innocent people, and I think I was just very lucky that I didn't come across anyone like that. I think we won't take your time. Thank you for joining us, and making this event even more successful. Thank you so much, Bobby. Thank you. We are missing you. We are missing Bobby. हमारे लिए प्रसाद लेके आइएगा, बाबा. हाँ जी, जरूर. हाँ. जप नाम. दर्शन. जी रेखा जी. जितना भी बॉडी ऑफ वर्क है उसमें बहुत सारा एक सोशल कनेक्ट है. NH10 होने दीजिए, मैरी कॉम होने दीजिए, कश्मीर फाइल्स होने दीजिए, और अब ये आश्रम 3, एक पहले से और तीसरी तक आपकी ये सफ़र है. आप इतना घूमते फिरते हैं या अपने फैंस से मिलते हैं, कहीं इस आश्रम के बाद आपने ये देखा है कि बाबाओं के प्रति लोगों का मोह भंग हुआ है, एक अवेयरनेस आई है? एक्चुअली इसके बारे में प्रकाश जी ने बता ही दिया. उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया. मैं आपका एक्सपीरियंस जानना चाह रही हूँ एक्चुअली. जी देखिए, जिस तरह का प्यार हमें मिला है, हमारे शो को मिला है, वो मुझे सोशल मीडिया के थ्रू या मैं जब भी लोगों से मिलता हूँ पता चलता है कि वो हमारे शो को कितना पसंद कर रहे हैं. लेकिन इतना पर्सनल मैं किसी से इस तरीके की बात नहीं कर पाया और ना ही जान पाया. बट हाँ, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ हमारी ऑडियंस का कि उन्होंने आश्रम को इतना प्यार दिया कि 1.6 बिलियन लोगों ने इसे देखा और प्यार दिया और इसे मतलब सबसे बड़ा शो बना दिया इंडिया का. तो उनका शुक्रगुजार हूँ. बस हाँ, उनसे प्यार मिलता रहता है जैसे आपने बताया, और मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ इसके लिए. थैंक यू. Thank you so much. Thank you for joining us as we serve lunch outside.